सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन। तो बर्तमान वीडियो में देखा जाऊँचे +2 सेकेंड ईयर इंग्लिश जो चैप्टर रही इनविटेशन टू इंग्लिश 1 माने प्रथम बुक्र जो आम देखा जाऊँचे डैफोडिल्स तार समस्त प्रश्न उत्तर थिंक इट आउट जो समस्त प्रश्न उत्तर जहाँ देती तुम बुक भितर जो क्वेश्चन रही तार समस्त आंसर बर्तमान आम यही भिडियो में ही डिस्कसन करवा। तेणुक जो मैंने भी नुआ अच्छा चैनल समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करनी और टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन में समस्ते सेठार जाई जॉइन हो जाओ। तो डेरी नक आम बर्तमान स्टार्ट करदे डैफोडिल्स चैप्टर सेकेंड ईयर +2 सेकेंड ईयर तुम इंग्लिश चलो देखीदे जहाँ सब प्रश्न उत्तर रही देखी नि पे तुम थिंक इट आउट रे टोटाल उपर प्लान रही 22टी प्रश्न समस्त प्रश्नर बर्तमान आम सठिक उत्तर डिस्कसन करने को जाऊँचे। तो चलो स्टार्ट करदे थिंक इट आउटर समस्त प्रश्न उत्तर ठीक अच्छे पिलाने। तो प्रथम देखनी प्रश्न ओके फास्ट क्वेश्चन देखने पिलाने प्रथम क्वेश्चन देखिए व्हेन डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स यार सठिक उत्तर कौन है पिलाने करेक्ट आंसर इज व्हाइल वंस वंडरिंग लोनली अलोंग द बैंक ऑफ ए बे ही अपियर टू सी द डैफोडिल्स ओके एटा है जो पिलाने सठिक उत्तर। 2 नंबर देखिए व्हेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स यार करेक्ट आंसर इज पिलाने ही सॉ द डैफोडिल्स अंडर द ट्रीज एंड बिसाइड द लेक एटा है पिलाने करेक्ट आंसर। 3 नंबर देछि पिलाने देखिनो 3 नंबर देछि फिल इन द ब्लैंक्स टू डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ स्टांजा 1 द पोएट वाज डैश इन द इंग्लिश कंट्रीसाइड ही सॉ द थाउजेंड्स ऑफ डैश फ्लटरिंग एंड डांसिंग बीनीथ एंड डैश बिसाइड ओके बिसाइड डैश द डैफोडिल्स अपियर टू बी डैश इन द स्ट्रॉन्ग ब्रीज। तो करेक्ट आंसर कौन है पिलाने फर्स्ट इज द पोएट वाज वंडरिंग इन द इंग्लिश कंट्रीसाइड he saw thousands of daffodils of fluttering and dancing beneath trees and beside the lake okay daffodils appear to be fluttering in the strong breeze okay ये जो पिलाने करेक्ट आंसर तले मध्य आंसर रही समस्ते यहाँ को लिखी नेब। तापर देखिए पिलाने 5 नंबर पचार व्हाट सॉरी 4 नंबर देखिए फास्ट देखिए 4 नंबर व्हाट डज द पोएट कंपेयर द डैफोडिल्स विथ यार सठिक उत्तर है द पोएट कंपेयर द डैफोडिल्स विथ द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द मिल्की वे ओके तुम गैलेक्सी रे जो स्टार गुड़िक चकमक कर सहित कंपेयर कर। 5 नंबर देखने पे व्हाट रिजेम्बलेंस डज ही सी बिटवीन द स्टार्स एंड द डैफोडिल्स करेक्ट आंसर है पिलाने द स्टार्स ट्विंकलिंग ऑन द मिल्की वे आर unlimited beyond one's eyesight. The daffodils dancing and stretching along the margin of the bay were also unlimited in number. एटा है जो प्लान सठिक उत्तर 5 नंबर। 6 नंबर देखिए व्हाट डज द पोएट से अबाउट द नंबर ऑफ द फ्लावर ही सेज that the daffodils stretched along the base margin endlessly and he could see 1000 of them at a glance, so he wants to tell that the daffodils were uncountable. एटा जो प्लान करेक्ट आंसर 6 नंबर। 7 नंबर देखिए प्लान where were the flowers यार सठिक उत्तर है the flowers were under the trees and beside the lake ओके। तापर देखिए प्लान 8 नंबर पचार which of the two danced more sprightly the waves or the daffodils correct answer is the daffodils danced more sprightly than the waves एटा है प्लान करेक्ट आंसर। तापर देखिए 9 नंबर पचार हाउ डज द पोएट फील व्हाइल लुकिंग एट द डैफोडिल्स यार करेक्ट आंसर इज तुम व्हाइल लुकिंग एट द डैफोडिल्स द पोएट फेल्ट बीइंग मेस्मराइज्ड ही स्टूड एंड केप्ट ऑन वाचिंग देम deriving bliss and serenity ओके। तापर तुम deriving bliss and serenity। तापर देखिए 10 नंबर देछि पिलाने व्हाट हैपेंस टू द पोएट व्हेन ही लाइज ऑन हिज बेड करेक्ट आंसर है पिलाने व्हेन ही लाइज ऑन द बेड द डांसिंग डैफोडिल्स एंड द डांसिंग वेव्स डांस इन हिज माइंड्स आई फीलिंग हार्ट विथ प्लेजर एंड सेरेनिटी। तापर देखिए पिलाने 11 नंबर देखिए मेंशन द 2 moods ऑफ द पोएट करेक्ट आंसर है जो 1 mood ऑफ द पोएट इज वैकेंट और थॉट फ्री एंड द अदर इज पेंसिव और पेनफुल एटा है जो प्लान तुम्हारा सठिक उत्तर 11 नंबर। नेक्स्ट देखिए प्लान 12 नंबर पचार तुमको क्वेश्चन पचार व्हाट डज द पोएट फील व्हेन ही रिमेम्बर्स द साइट ऑफ द डैफोडिल्स यार करेक्ट आंसर है प्लान व्हेन ही रिमेम्बर्स द डैफोडिल्स he feels like being relieved of all his worldly worries and he derives peace and serenity okay। तापर देखिए प्लाने 13 नंबर पचार व्हेन डज द पोएट राइट द पोएम बिसाइड और ऑफ द लेक एटा है जो प्लान सठिक उत्तर पोएम ऑफ द लेक ओके।
he the poet writes the poem of the lake. 15 तापर देखिए 15 नंबर पचार how many times is the word dance repeated in this poem, in which line does it show the happiness and liveliness of the flowers. Correct answer is the word dance has been repeated 4 times in this poem. It shows the happiness and liveliness of the flowers in the line tossing their heads in sprightly dance. It is जो लिखित पूरा correct answer. तापर 16 नंबर देखिने प्लान in which line does it create a sense of harmonious relationship between the daffodils and the waves. The line in a such jocund company shows the harmonious relationship between the daffodils and the waves. ठीक है. तापर देखिना 17 नंबर in which line does this harmonious relationship include the poet himself. एटार करेक्ट आंसर हो I gazed but little thought. एट लाइन हो includes the poet in the harmonious relationship. 18 नंबर देखिन what figures of speech do you find in the poem. देखिन प्लान कौन हो in the poem we find the figures of speech called metaphor and simile. एटा हो प्लान सठिक उत्तर. ठीक है. तापर देखिए प्लान 19 नंबर देखिए simile is a figure of speech that makes an explicit comparison between two unlike things by using like, as, etc. For example, in I wandered lonely as a cloud, as the loneliness of the poet resembles the loneliness of the cloud that is floating high in the sky. The figure of speech used in a simile. What other example of a simile do you found in the poem? अदर एग्जाम्पल गोटे पचार द आंसर हो कंटिन्यूस as the stars that shine in the other example of simile we find in the poem. ओके एटा लिखिदेव करेक्ट आंसर हो. 20 नंबर देखिए मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स एन इम्प्लिक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स इन व्हाट वेल्थ द शो टू मी had brought. The poet imagines the happiness brought to him by the beautiful scene of the flowers as wealth. Does he use a metaphor here? Answer is yes, a metaphor has been used here by the poet. Okay, तापर 21 नंबर देखिए 10,000 saw I at a glance. Is it an exaggeration ना will you call it a hyperbole? এটা কোন হিজো প্ল্যানে সঠিক উত্তর. এর সঠিক উত্তর হিজো প্ল্যানে yes it is an exaggeration and it is called hyperbole. ओके देखि नबो दुईटा अंक ही हिजो. 22 नंबर पचार व्हाट फिगर ऑफ स्पीच डज द पोएट यूज इन दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन. यार करेक्ट आंसर इज द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड हाइपरबोल हैज बीन यूज्ड बाय द पोएट इन दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन. पूरा कंप्लीट हो गला. बर्तमान आम देखने डैफोडिल्स चैप्टर समस्त 22 टी जाक क्वेश्चन आंसर. ओके देखने पे समस्त प्रश्नर उत्तर आम बर्तमान देखीदे तुम्हें खातार निहाती लिखिदेव. ओके तो नेक्स्ट वीडियो में आउ एक चैप्टर क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा. थैंक यू.